You want to बिल्कुल get a बिल्कुल। Bengali to talk in English? That's going to मास्क उतारो be जी में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ है साकिब सुरेश जी, पल्लवी घोष एंड आदित। तीनों की इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। दे आर रॉकिंग ऑन सोशल मीडिया एंड हर जगह ये दिखते हैं। पल्लवी तो हर जगह ही दिखती है, सारा टाइम ही दिखती है। एनीवे, हाय पल्लवी, हाय साकेत एंड हाय आदित। हाय पल्लवी, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू एज लेडीज फर्स्ट। चलो बात कर रहे थे, विक्टिम कार्ड खेल लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि विमेन को कुछ मिलता नहीं है इंडिया में, जैसे राहुल गांधी आजकल कहते हैं। मिलता है। नहीं, बट राहुल नहीं गांधी सेइंग ना कि बहुत वुमेन का बुरा हाल है इंडिया में एंड यू नहीं, डोंट नो इट्स ऑल। to a certain extent I agree with him, क्योंकि गांव में that women beating and torture is there, but to say कि women are not improving and not breaking the glass ceiling, वो थोड़ा सा गलत होगा। आज ही तो एक महिला को बनाया गया ना कैप्टन इन दैट वेस्टर्न यूनिट और समथिंग, सो थिंग्स आर चेंजिंग। Okay, Pallavi, before we go, our main topic today is Cambridge, RSS, and Mr. Rahul Gandhi. फिर मेरे को आप ये बताओ, what does Congress mean by Godi media? Who is Godi media according to Congress? Well, according to them, मैं हूँ anyone who seems to be, so literally speaking उसका मतलब यही होता है कि जो गोदी पे बैठ जाता है, जो गोद पे जाके बैठता है। मतलब इन दिस कॉन्टेक्स्ट उनका मतलब ये है कि जो लोग बीजेपी के या आरएसएस या सरकार के गोद में बैठे हुए, दैट इज व्हाट गोदी मीडिया इज ऑल अबाउट। एंड इट्स अ मोर परसेप्शन। एनीवन जो उनके साथ सहमत नहीं हो या उनका पॉइंट ऑफ व्यू ना रखे और बीजेपी को फॉलो करे, या कभी कभी वो पॉइंट ऑफ व्यू रखे जो उनको लगता है बीजेपी टाइप पॉइंट ऑफ व्यू और राइट विंग टाइप ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, उनको वो लोग वोट देंगे। अपना आजकल मैं हूँ। Okay. आज हमारा टॉपिक बेसिकली आई वाज रियली लिविड आफ्टर रीडिंग what he said about RSS. He's, as a nationalist, as an Indian, as a Hindu, मेरे को वो थोड़ा डिमीनिंग लगा, ह्यूमिलेटिंग लगा कि आप एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके ये सब चीजें बोल रहे हो एंड कंपेयरिंग आरएसएस टू मुस्लिम ब्रदरहुड। मुस्लिम ब्रदरहुड का तो पता ही नहीं कौन मेंबर्स हैं, ना कोई रोड पे दिखते हैं, एवरीथिंग इज वेरी हिडन। एंड आरएसएस के तो चीफ भी आपको हर वक्त मिलते हैं। आरएसएस के चीफ बहुत राष्ट्रवादी होते हैं, तो आई डोंट थिंक सो मुस्लिम ब्रदरहुड के ये जो आईसिस वगैरह है, ये लोग कोई राष्ट्रवादी होते हैं। इट्स ऑल अबाउट रिलीजन फॉर देम, and whereas RSS is nothing to do with the religion, it's more to do with नेशन, नो राष्ट्रवादी होते हैं। तो आप बताओ मेरे को पल्लवी कि ये व्हाट इज ही ट्राइंग, राहुल, व्हाट इज ही ट्राइंग, व्हाट डज ही वांट? So this is not the first time he said so. I mean, earlier, I think around a year or so back in UK also, उन्होंने pretty much same चीज कहा था। जब उन्होंने कहा था कि बीजेपी और आरएसएस मुस्लिम ब्रदरहुड जैसा ही ऑर्गेनाइजेशन है, तो मुस्लिम ब्रदरहुड बेसिकली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। या इनफैक्ट जब इजिप्शियन अपराइजिंग राइजिंग जब हुआ था तो कहा जाता था कि उन्होंने स्टोक किया था पूरा प्रोटेस्ट एंड कंसिडर टू बी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो उनका यही कहना है कि दोनों का मानसिकता सेम है, दोनों टेररिस्ट है। In fact, Rahul Gandhi is facing a defamation suit because he likens the RSS to a terrorist organization. And here by terrorist, what he means is their mindset, which is very not inclusive, which is exclusive, which is, I mean, there were a section of the Congress leaders, जो मुझे याद है, चिदम्बरम बोलते थे, something called saffron terror. उसकी बात वो करते थे। your voice is cracking. हाँ, और काफी people object to it. Can you hear me now? yeah, I I can. think hear it's me now? Payal Yeah. more than you. Okay, I know maybe it's a bad network, but yeah. So basically, what he's trying to say is that the non-inclusive mindset of say a Muslim Brotherhood is very much similar to what the RSS is all about. And I don't know. I mean, I don't know much about the RSS. I'll be very honest about that. But I think it's very unfair because at the end of the day, it's an Indian organization. You may not agree with its point of view, but to completely compare it to a known terrorist organization is really, really unfair. I mean, then you can say that Lashkar-e-Toiba jaisa hai, Jamaat-e-Islami jaisa hai. So that's what the objection is all about. अच्छा, My साकिब, point is, हाँ, my Adit, just only one, contention is, okay, sorry, okay, no, say, finish No, it, look, yeah, complete. my only contention is if he's saying that it is a terror organization, or it's like an organization like the Muslim Brotherhood, which is a complete organization that is looking at Islamicizing the world. That is not what RSS stands for. But how does he not read history at all? Does he not see in 1965 during the wartime
Lal Bahadur Shastri essentially relieved the Delhi police from their duty so they could, focus on wartime efforts. And RSS was essentially policing Delhi. And the same thing happened in 1971, where they were actually involved with the Indian army, digging trenches. They were running blood camps. They were running, social sort of movements in Bengal, in the border areas of Bengal. Does he not read that kind of history, or does he just go and build up these conjectures and things that people are just going to buy into this sort of narrative? It's completely perplexing. Sorry Payal ji, मैंने hijack कर लिया ये नहीं वाली नहीं, line इट्स ओके, आपकी. नहीं नहीं, इट्स ओके। साकेत जी, आप मुझे बताइए, एज एन इंडियन एंड एज अ हिंदू, एज अ राष्ट्रवादी, आप इस पूरे ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ कंपैरिजन है आरएसएस का, आप इसको कैसे देखते हैं? आप एक वोटर हैं अगर, तो अगर आप कैसे देखते हैं उसको? आपको आवाज आ रही है पायल जी? जी जी जी, हाँ जी। तो पायल जी, इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो जो बात आपने जहां से शुरू की थी कि व्हाट इज गोदी मीडिया, जो पल्लवी जी ने अभी कहा कि नो, शी इज ऑल्सो ऑनरेबल मेंबर ऑफ गोदी मीडिया। बट ये जो चीज है, मैं देख रहा हूँ ये चीज तो काफी बदलती रही है। और खासकर अभी जो राहुल गांधी का जो सलाहकार मंडली है, वो इस प्रकार की है कि उनको जो भी थोड़ा सा इधर उधर अगर कुछ लगता है, वो उसको गोदी मीडिया बोल देते हैं। वो जो अभी उनकी सलाहकार मंडली है, द अनइलेक्टेड एंड अनइलेक्टेबल, जो उनके साथ आप देख लीजिए जितने भी लोग हैं, वो सब जमानत जब्ती वाले लोग हैं। वो ऐसे नहीं है कि उनकी जमीन पे बड़ी पैठ है और इलेक्शन जीतते रहे। तो उनके पास ज्ञान देने के लिए बहुत है नहीं। मतलब कोई 10वीं फेल है, वो बता रहा है उनको कि जेई कैसे निकाला जाए, ये इस तरह की स्थिति है। तो वही लोग उनको ज्ञान दे रहे हैं। और अभी मेरे को लगता है कि शायद इतना आक्रोश उस पर इस कारण से नहीं है क्योंकि राहुल सत्ता में नहीं है, और राहुल काफी हद तक इररिलेवेंट होते जा रहे हैं। हम जो इस पे बहस भी कर रहे हैं, बहस अगर आप मतलब जमीनी स्तर पे देखें तो लोगों को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि वो लंदन जाके क्या बोल रहे हैं। ये हम लोग ट्विटर पे हैं, हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं। पल्लवी जी क्योंकि जमीन पे भी एक पत्रकार के रूप में कार्य करती है, उनको इस विषय में ज्ञान होगा कि जमीनी स्तर पे बहुत लोगों को बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है। ही हैज बिकम टोटली इररिलेवेंट। वो वहां जाके क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। और दिक्कत ये है कि उनको जो सलाह दे रहे हैं, वो सलाहकार ऐसे हैं कि उनको पता नहीं है कि उन्होंने ना खुद कभी चुनाव जीता है, ना उनको पता है कि चुनाव जीते कैसे जाते हैं। उनको ना ये पता है कि कौन सी चीज जो है वोटर्स के मन में क्या कॉर्ड स्ट्राइक करती है। आप जब जाके विदेश में जाके इस प्रकार की बातें करते हैं, मुस्लिम ब्रदरहुड से एक सामान्यीकरण करते हैं, तो वो एक डेजिग्नेटेड, यूएन डेजिग्नेटेड टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। और अभी आदित्य जी ने जो बात कही कि 65 में जो आरएसएस ने किया, आप 65 के पहले का पढ़े, पार्टीशन के समय सरदार पटेल की एक बड़ी प्रसिद्ध स्पीच है लखनऊ में, जो उन्होंने पर्टिकुलरली मुस्लिम ऑडियंस को दी थी। उस स्पीच में उन्होंने ये कहा था कि आरएसएस के लोग जो है, उनका तरीका जो है कांग्रेस से भिन्न है, परंतु वो नेशनलिस्ट है, वो राष्ट्रवादी है, वो देश के लिए काम करते हैं। पटेल ने बड़े खुल के कहा था। उन्होंने यहाँ तक ये भी कहा था कि मैं उन्हें निमंत्रण देता हूँ कि वो कांग्रेस में जुड़ जाए। क्योंकि एक मामले में देखिए, पटेल साहब जो थे वो भी एक जो कहते हैं धुर कांग्रेसी थे। वो ये चाहते थे कि सभी लोग कांग्रेस में जुड़ जाएं। और 47 की जो परिस्थिति ये थी, उनकी इच्छा ये थी कि सभी लोग कांग्रेस में जुड़ जाएं। और जो आज जो वन पार्टी डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेसी की बात होती है, वही इच्छा नेहरू की भी थी कि एक वन पार्टी डेमोक्रेसी है, बाकी सब छुटपुट इधर उधर कुछ करते रहे। उन्होंने अम्बेडकर तक को जीतने नहीं दिया। तो वो जो उनका माइंडसेट था, वो उस वक्त भी ये था कि, लेकिन उसमें ये था कि उनको लगता था कि आरएसएस से हमारा कोई दुराव नहीं है, इसकी जो नीति कुछ अलग हो सकती है, लेकिन एंड रिजल्ट और एंड गोल यही है कि देश राष्ट्र सर्वोपरि। तो ये तो वो मान के चलते थे। अब मुस्लिम ब्रदरहुड का आप देखें तो इसमें जो पल्लवी जी ने कहा अरब स्प्रिंग का, उसमें तो सोरोस का भी रोल आया कि सोरोस ने उसको फंडिंग किया थ्रू मुस्लिम ब्रदरहुड। he created a bloody revolution and that bloody revolution ended with even more blood। तो वो जो चीज है, उसको अगर आप चीजों को जोड़ें तो चीजें एक तरह से जुड़ती हुई आपको दिखती है। मतलब एक इनकी जो कहते हैं नैसर्गिक मूर्खता है राहुल गांधी की, वो तो उसमें निहित ही है जिस तरह से वो बोल रहे हैं। उसके अलावा जो है बाकी चीजें, मतलब, और आप अगर देखें जो कल का जो डिबेट था, उसमें उनसे पूछा भी नहीं गया था आरएसएस के बारे में। उनसे पूछा कुछ और गया था, भारत की राजनीतिक परिस्थिति के विषय में बोला गया था। और वो उन्होंने सीधा बात ही शुरू की आरएसएस से लेके। पायल जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, सुन रही हूँ, सुन रही हूँ। तो मेरा मेरा तो ये मानना है कि ये एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण वो है। और मुझे लगता है कि इस पे आम जनता का तो ध्यान नहीं, किंतु ये लगता है कि बीजेपी को इस मामले को बहुत तूल देनी चाहिए। इस बात को नीचे नीचे तक पहुंचाना चाहिए कि देखिए, वो
आतंकी संस्था के साथ उसको कंपेयर कर रहे हैं। बाकी तो आरएसएस के जो गतिविधियां हैं आप देख लीजिए कि वो वनवासी शिक्षा वाला जो इनका क्षेत्र है उसमें उन्होंने कितना काम किया है। कहाँ कहाँ पे मतलब पहाड़ों में जंगलों में इन्होंने स्कूल खोले हुए हैं और वहां से अच्छे अच्छे छात्र पढ़ के निकलते हैं। तो उसका मुस्लिम ब्रदरहुड से कोई समीकरण ही नहीं बैठता। जी। Adit, do you think that Rahul Gandhi somewhere feels that ये देश मेरे बाप का है, मतलब only Gandhis own this country and the country and citizens owe it to them कि आप उस उन्हीं को नहीं वोट नहीं, करो और मैं इसमें एक चीज कहना चाहूंगा पल्लवी जी कह रहा हूँ पायल जी कि इस राहुल गांधी को ये नहीं लगता कि ये देश मेरे बाप का है। राहुल गांधी को ये लगता ही नहीं है कि ये देश मेरे बाप का है, यही समस्या है। राहुल गांधी को अगर लगता होता कि ये देश मेरे बाप का है, राहुल गांधी को लगता है ये देश जाएगा तो मेरे बाप का क्या जाता है। so but I feel कहीं ना कहीं मे बी वो आदित्य आपको लगता है वो इलेक्शन पे इलेक्शन हार रहे हैं इसके कारण वो फ्रस्ट्रेटेड है एंड एंटाइटल्ड कहीं एंटाइटल्ड भी फील करते हैं कि यू नो आई एम राहुल गांधी लाइक यू नो आई एम गांधी। इसमें कोई दो राय नहीं। आई मीन द फैक्ट दैट व्हेन ही सीज, वो जब अपने फैमिली में देखते हैं, व्हेन ही लुक्स एट लीडर्स लाइक इंदिरा गांधी, when he looks like Rajiv Gandhi, I per se don't agree with Rajiv Gandhi, but still, he was a leader who stood tall at times. He drove India through tough times. When he looks at his own great grandfather as well, he somewhat feels like belittled to a certain degree. That's my personal assumption, understanding of this man. But other than that, I think where he's getting massively influenced is with the cabal that goes around with him, and that is where I have a fundamental problem. क्योंकि उनके लिए it's become fashionable कि अगर आप हिंदुस्तान को गाली दोगे, अगर आप प्रधानमंत्री को गाली दोगे, अगर आप बीजेपी को गाली दोगे, अगर आप आरएसएस को गाली दोगे, अगर आप हिंदुत्व को गाली दोगे, by the way, which Hindutva is essentially a Sanskrit word of being Hinduism. It's the essence of being a Hindu. अगर आप उसको जब तक आप गाली नहीं दोगे, तब तक आप वो सेक्युलर और लिबरल के जो ब्रैकेट में you don't fit into that category, and that's where I have a fundamental problem with him. And that's what he's essentially displayed throughout. Your voice is cracking, Adit. It's frozen. Pallavi, can you hear me? Adit, your voice is it's cracking. Adit, I can't hear you. Pallavi, can you hear me? एक जैसी साड़ी पहनती है, देखो नाक ऐसा है, ये है. So I think there's a group around him and them. They want to मैम, keep this whole so-called ये जो aura and इनका enigma of the Gandhi परिवार alive. That's ये what जो I इनका think is the ये जो problem. इनका ग्रुप है पल्लवी जी, आप ये बताइए कि ये जो जैसे सुप्रिया श्रीनेत, जयराम रमेश हैं, अगर फॉर अ मिनट इफ यू अज्यूम दैट राहुल गांधी कम्स टू पावर और कांग्रेस कम्स टू पावर, व्हाट विल बी देयर रोल बी? दैट्स इफ यू थिंक अबाउट इट, इनका तो अस्तित्व खतरे में आ जाएगा ना अगर कांग्रेस जीत जाती है और No, सत्ता but में आ मुझे जाती लगता है ऐसी Jairam है। was a इनको very, तो to be fair, is very intelligent. I mean, ही he is इज actually very इंटेलिजेंट बट intelligent, well read, and he was a good minister. He was ही a very इज good minister. इंटेलिजेंट, So ही इज if रिटन। ever Rahul Gandhi comes to power, Congress comes to power, I'm sure he'll find a place. Because see, बाकी some people are good as ministers, some people are not good as salakans. नहीं तो बट देर आर पीपल हु हैव नॉट वन इलेक्शन, हु कैन नॉट विन इलेक्शन, फॉर देम इट इज बेटर टू कीप परपेचुअली कांग्रेस आउट ऑफ पावर बिकॉज दे दैट गिव्स देम पावर। जो पुराने जमाने की आप रियासतें देखें जहाँ पे जमींदार होते थे ना, वो जमींदार की जो दुर्गति होती थी वो जमींदार के खुद के कारण नहीं होती थी, उसके पीछे जो चार लोग घूमते थे ना, जो चुन्नी लाल चार घूमते थे, वो उनके कारण उसकी दुर्गति होती थी। तो ये देवदास के साथ जो चुन्नी लाल जुड़े हुए हैं ना, मुझे ये लगता है कि इनकी जो शक्ति है, जो इनकी जो ताकत है, वो तभी तक चलेगी जब तक राहुल गांधी सत्ता से बाहर है। इनके लिए बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है कि राहुल गांधी सत्ता से बाहर है। वो अचानक से ऐसा नहीं कि सुप्रिया श्रीनेत की जमानत जब्त होती है उसको उठा के राज्यसभा में बिठा देंगे अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। उनके लिए बहुत But जरूरी है लेकिन कब तक? आफ्टर ऑल पावर तो सबको चाहिए होता है ना. आप आउट ऑफ पावर रहोगे तो कब तक वो पावर मिलेगा? तो वो उनके पीछे वो कहते हैं ना कि राजा साहब आप क्यों घबरा रहे हो, आप तो हो पावर में, आप कैसे बोल रहे हो, आप देखो आप लंदन जाके बोलते हो तहलका मच जाता है, आप ये सब तो बाकी मिथ्या है, वो तो पीएम वीएम की पोस्ट से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। आप पावर में हो, क्या आप देखो क्या जाके ये बोलो। लोग
क्या ground reality से इतने परेज है? Are they so disconnected that they cannot see what's essentially unfolding? मतलब the Northeast elections have happened not so long ago. You've seen how they've absolutely been decimated. Yeah. And then what is your disaster management when things like that happen? You go and call Mukul Sangma a Judas. You call these Northeast states too small in the bigger scheme of things, and Yeah, that is your that I damage don't know why control. he said. Why would you indulge in that kind of intellectual But to be fair, bankruptcy? Adit, ऐसा नहीं है कि everyone in the Congress party doesn't understand. I mean, जो पुराने नेता हैं, जो grassroots के नेता हैं, they do understand कि चुनाव जीतना बहुत जरूरी है. इसलिए there is a section of them who are very uneasy with what was being said in UK because देखो उसका ramifications क्या होगा, and the fact that how BJP will of course spin it, and why not BJP? Oh, your AirPods. Your AirPods. Pallavi, can't hear you. अच्छा मुझे आप एक Pallavi, I have another question for you. Why he's being seen with this guy Kamal or Kamal Munir? Why? What is he defying? Whom is he defying? So their explanation and clarification is Kamal Munir is a pro vice chancellor of the Cambridge Business School, and he was there not because of his nationality or origin, but because of the position he holds. तो अगर आप कैम्ब्रिज बिजनेस स्कूल के तरफ से वो पहला टॉक हुआ था तो जाहिर सी बात है अकॉर्डिंग टू देम द प्रो वाइस चांसलर वाज has to be present there. तो उसकी nationality मत बन जाए, ये उनका तर्क है. This is their argument and clarification. But can I just say, because I am driving this whole movement in the UK particularly with regards to the academia in the UK is extremely rabid, not only towards India as a country, but Hinduism and the civilizational values of Hindus. So, there is this whole dismantling global Hindutva project, stop caste discrimination, and all of these projects are, sort of taking shape in the Western world. And all of this is essentially coming out from these academic institutions like the King's College London, Cambridge, Oxford, Warwick University, London School of Economics. और यहाँ पर आप देखोगे इन सबको वहां पर जगह मिलती है, उन सब फंडिंग मिलती है इन सब चीजों पे रिसर्च करने के लिए. You look at academicians like Angana P. Chatterjee, Natasha Kaul, who's by the way from Delhi, and look at the way she talks about Kashmir in London. So, there is this whole cabal of, academia, which is extremely rabid and is working against India. Jiske khilaf, there needs to be a more concerted and a more organized sort of a movement against them, because what they're doing, is extremely dangerous for India. एंड साकेत जी आप मुझे ये बताएं कि जैसे ये इतना ज्यादा एंटाई हिंदू के लिए दिखा रहे हैं, इतना ज्यादा सनातन धर्म के अगेंस्ट दिख रहे हैं राहुल गांधी, तो इनको पता नहीं कि इंडिया इज अ हिंदू मेजोरिटी कंट्री और वो फिर भी लगे हुए हैं. मतलब आई एम सो कंफ्यूज्ड एंड आई एम आल्सो लिविड, मुझे लगता है आई एम कि वेरी एंग्री आल्सो. मुझे क्या लगता है कि ये लोग इतना ज्यादा ग्लोबल हो गए कि दे हैव लॉस्ट द सेंस ऑफ लोकल. दैट्स व्हाट माय फीलिंग इज. ग्लोबली जो है एक बहुत बड़ा कैंपेन, लाइक आदित हैड सेड, देयर इज अ ग्लोबल कैंपेन व्हिच इज अराउंड, और उसमें एक आई थिंक बीजेपी आल्सो टू एन एक्सटेंट प्लेज इन दैट नैरेटिव, मे बी अननोइंगली, when we keep on saying that our secularism is defended by our constitution. It is not. Our secularism is protected and defended by the inherent nature of Hinduism. जब पारसियों को जब वहां पे ईरान में जब कष्ट हुआ था, तो उन्होंने सारी दुनिया देख के वो व्हाई डिड दे नॉट लैंड इन अफगानिस्तान और एनीवेयर एल्स, व्हाई डिड दे क्रॉस्ड ऑल द places and landed up in India? Because that is the inherent nature of Hinduism, because obviously you worship multiple gods, so you accept everybody. That's the basic inherent nature of Hinduism. Otherwise अगर आप देखें in the middle of partition, अगर नया constitution बना भी था, people could have objected and said कि नहीं, हमको नहीं चाहिए secularism, it has to be a Hindu राष्ट्र. Why? आज की डेट में तो it has been way too much of time which has passed. उस समय तो everything was heated up, people would have said, but because inherently we are secular, so nobody objected, and people said कि fine, yeah, that's the right approach to take. And so it's not big.
इंडिया इज नॉट सेकुलर बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सेकुलर बिकॉज ऑफ हिंदू। एंड ग्लोबली जो ये एक नैरेटिव चल रहा है कि अगर हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो यहाँ से सारे माइनॉरिटीज को भगा देंगे। भाई आपका तो अभी थोड़े दिन पहले ही प्रिंस चार्ल्स ने या किंग चार्ल्स ने जो ओथ लिए, ही टुक द ओथ एज ए डिफेंडर ऑफ द फेथ, तो वहां से क्या सारे नॉन क्रिश्चियंस को भगा दिया है? बाइडेन टेक्स द ओथ ऑन बाइबल, do they do they send all the non-Christians away from America? They don't do. So, but ये एक narrative है. There is only one country which is struggling, which is a Hindu majority country, which is struggling to claim itself maybe spiritually as a Hindu राष्ट्र, not even politically. That is being opposed tooth and nail because वो globally उनको लगता है कि कहीं कल को ये spiritually Hindu राष्ट्र will become a political Hindu राष्ट्र, it will create a new Hindu nation with 1.3 billion people sitting in it. That's I think the global narrative as a third largest minority. It is the operation of a third largest minority. This is my Pallavi, feeling, and this is what is guiding the idea of Rahul Gandhi, because he is very much clued into global this thing. He keeps on saying goes to America, वहां पे जाके कहते हैं कि आप हमारी मदद कीजिए, you should intervene. अब अगर ना मीडिया उनके साथ है, ना जुडिशरी उनके साथ है, कोई भी उनके साथ नहीं है, तो 2014 में तो सब उनके साथ था ना, क्यों हार गए? वो जो पब्लिक माइंडसेट है उसको नहीं समझ पा रहे हैं। Okay, Adit, I'll just come to you. Pallavi, I remember once I was watching your show and you said कि कहीं ना कहीं, can you hear me, Pallavi? कि कहीं ना कहीं ये जो जाइब था राहुल गांधी का अबाउट सूट बूट की सरकार, इट हैज, आप सडनली देख रहे हो कि मोदी जी कुर्ते पजामे में है, सब लोग कुर्ते पजामे में आ गए। आई रिमेम्बर यू सेइंग समथिंग अबाउट इट। पर आज आप देखो तो राहुल गांधी, नेहरू एंड राजीव गांधी को सूट्स की, उनकी सूट्स में पहने हुए पिक्चर्स दिखा रहे हैं एंड दे सेइंग सो दिस इज क्लास, एंड ये सब दिखा रहे हैं, आज राहुल को भी सूट में दिखा रहे हैं। So don't you think that every day they're contradicting what they are saying and what they, I don't know, I'm not understanding Congress at all. So ये सूट बूट की सरकार उन्होंने 2019 के चुनाव के ठीक पहले शुरू किया था। और बेसिकली उनका कहना ये था कि ये सरकार सिर्फ कॉर्पोरेट्स के बारे में सोचती है और सूट बूट की सरकार है और आम आदमी की सरकार नहीं है। और ये उसी समय हुआ था जब आई रिमेम्बर प्रधानमंत्री ने सूट पहना था, वो मोनोग्राम सूट था, उसको काफी बवाल हुआ था। एंड मुझे एक्चुअली आई नेवर अंडरस्टूड दिस, व्हाई शुड योर क्लोथ्स, and this is important for every political party, what you're wearing, why should one be apologetic about it, and second, why should it become a kind of an election slogan? For example, the Congress party attacked, and that was also when I was called the Godi media. You know, when I remember something I said about a t-shirt or the beard t-shirt, but then I noticed कि इन्होंने खुद इसको एक इशू बना दिया। फॉर एग्जाम्पल, द सोशल मीडिया हैंडल ऑफ द कांग्रेस पार्टी ने एक स्लाइड निकाला, उसमें एक साइड पे दे शोड राहुल गांधी वेयरिंग अ टी-शर्ट इन द कोल्ड, ऑन द अदर साइड दे शोड द होम मिनिस्टर सिटिंग एट राजघाट वेयरिंग अ शॉल एंड ऑल, एंड दे मेड फन ऑफ द होम मिनिस्टर ऑन दैट। आई हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। आपने खुद ट्रिविलाइज किया अपने भारत जोड़ो यात्रा को, मेकिंग इट ऑल अबाउट हिज बियर्ड एंड टी-शर्ट, ठंड में एंड ये एंड वो, and then you are blaming the other party. Second thing is, I mean, he's the prime minister of the country, right? He represents our country when he goes abroad. And जैसा देश वैसा भेष, उसमें क्या बुराई है? Even Sonia Gandhi, Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi Vadra, even Rajiv Gandhi, and all of them would dress accordingly, and there's nothing wrong in that. But look at the kind of clothes they wear. They wear a sherwani or a Nehru jacket. Pradhan Mantri wears a Nehru jacket, right? तो उसमें बुराई क्या है? And today wearing a suit has become very normal even over here. Why is there a sense of entitlement कि only a अमीर आदमी suit पहनता है? I wish they would know there are people around me. I'm sitting down in a salon, okay? I can see these young workers. They are planning to have a Holi party. They may not be wearing an expensive suit, but they are wearing a suit. For them, it's aspirational. इसमें कोई मजाक उड़ाने वाली बात नहीं होती है। माई प्रॉब्लम विद देम इज ओनली ऑन दिस, खुद ट्रिविलाइज करते हैं और खुद इसको एक इशू बनाते हैं। हाँ जी, मैं मतलब आई थिंक इट्स नॉट अबाउट सर्टोरियल चॉइसेस ऑफ पीपल, इट्स मोर अबाउट उस समय ही आप देखिए ये जेएनयू वाला कहानी हुआ, कन्हैया कुमार इनके क्लोज होते चले गए, जो लेफ्टिस्ट टेक ओवर ऑफ कांग्रेस हैज हैपेंड अराउंड 2017-18, और उसके बाद से इन्होंने ये तमाशा शुरू कर दिया। अब मैं कल ही देख रहा था कि जो अदानी, साकेत जी, आई कांट हियर यू। हाँ, ऑडियो चला गया आपका।
हाँ, ऑडियो चले गया। अभी आ रही है? हाँ जी, आ रही। तो हाँ जी। इसका जो बिगेस्ट इनका जो पॉइंट था वो अदानी पोर्ट्स है, जहां से इन्होंने अपना बेस शुरू किया। दैट अदानी पोर्ट्स वाज एस्टेब्लिश्ड इन 98 एंड दैट वाज बिटवीन गुजरात गवर्नमेंट, एंड दैट गुजरात गवर्नमेंट वाज विद दिस राष्ट्रीय जनता पार्टी, विच इवेंचुअली मर्ज्ड इन कांग्रेस। उसके बाद इनका जो एसईजेड वाला जो हुआ, दैट दैट हैपेंड विद सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट डिड नॉट हैपन विद गुजरात गवर्नमेंट, दैट हैपेंड इन 2005 व्हेन कांग्रेस वाज इन पावर इन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अदानी को जो दो मेजर ब्रेक्स मिले थे, ब्रेक थ्रू मिले थे, जिनके थ्रू इट बिकेम अ लार्ज एंटिटी, both happened during the UPA government and the Congress supported government in Gujarat as well as at the center। वो इनको दिक्कत ये है कि ये दे डोंट रियलाइज कि लोग, इनको ये लगता है कि लोगों को क्या पता है, वो फैक्ट्स तो पता नहीं होंगे, तो इनको लगता है कि ये सारा कुछ उस पर डोल दो, और वो बिकॉज ऑफ देयर लेफ्टिस्ट वाई अशोक गहलोत, उनका तस्वीर देखा गया था ना, एंड वो तो नथिंग अभी का है। रॉन्ग। अशोक वो गहलोत अब अभी मैं का तो कह रहा हूँ है, अभी का है, भूपेश बट बघेल वो तो अभी अभी कह भी रहे हैं तो कि कर अब रहे वो हैं बड़ी ना। पार्टी हो गई। बट जब शुरू हुई बड़ी एंटिटी हो गई, जब अदानी शुरू हुआ तो उसको खड़ा करने वाले तो यही थे ना। 98 में गुजरात गवर्नमेंट से डील हुई, गुजरात गवर्नमेंट की डील हुई, आरजेपी थी उस समय सरकार में। जब इनकी एसईजेड की डील हुई, विच वाज अनदर लार्ज डील, दैट हैपेंड विद सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2005 व्हेन राहुल गांधी एंड यूपीए वाज इन पावर इन सेंटर। तो इनको ये लगता है ये छोटी छोटी चीजें लोगों को कहाँ याद रहेंगी। और दूसरी बात ये कि जमीन पे अगर आप जाते हैं, एक आदमी, अभी आप देखिए कि वो जितने भी एएमसी के जो भी ट्रैक करते हैं न्यूज चैनल या बिजनेस चैनल, वो सभी कह रहे हैं एएमसी में बहुत ग्रोथ होगी बिकॉज पीपल हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग लाइक क्रेजी आफ्टर कोविड इन स्टॉक मार्केट। उनका अगर पैसा गिर रहा है, उन्होंने कुछ पैसा लगाया है, ये इतना खुश हो के जो ट्विटर पे बोलते हैं कि आज इतना गिर गया, आज उतना गिर गया, डू यू थिंक पीपल विल बी हैप्पी हु आर लूजिंग देयर मनी? आदित्य, यू वर सेइंग समथिंग, आप नहीं, बोलिए। आई एक्चुअली अग्री विद साकेत जी। ये जो हिपोक्रेसी है कि आप एक चीज के बारे में बात करोगे और दूसरे चीज के बारे में बात नहीं करोगे, तो वही अडानी जी को आप देखते हो, तो जो फर्स्ट 10-12 बिलियन जो उन्होंने बनाए थे, ही मेड इट ड्यूरिंग द कांग्रेस regime, which इज अ फैक्ट। तो आपको 1 से 12 बिलियन पहुंचने में आपको जो डिफिकल्टी होती है, वो 12 से आपको 50 में उतनी डिफिकल्टी नहीं, नहीं होती है। ट्रू। दिस इज लॉजिक। So I don't know why don't they actually talk about this? And my problem is also with the BJP, which actually doesn't take this issue up much often. Rahul Gandhi, while in the UK, he went on about the killing of the press, stifling of democracy, गला घोट दिया press freedom का वगैरह वगैरह. But I was speaking to Pallavi what about 3 or 4 days ago, just about 3 days ago, I think, and I said to her that I found out that just from 2018 to 23 or 2022 rather, Adesh Raval was attacked at the Congress headquarters. Shiv Arur and Gaurav Sawant were trolled really badly. There were another couple of YouTubers, I think Lallan Tap or something. They had to publicly apologize, for saying something about Rahul Gandhi. I mean, they did use non-glamorous language, but then it doesn't. They shouldn't have to be harrowed the way they were harrowed, and then arm twisted to apologize. And Pallavi herself, was essentially harassed by the Congress IT cell because she raised up the issue of, the Rajiv Gandhi killers, and so the Congress essentially attacked. So my problem is, why are they doing this kind of duplicity? In Maharashtra, I don't agree with Arnab Goswami. I do not like his style of journalism, but he is still a journalist. He was just bombarded with 200 FIRs. So that is, if that is not killing of democracy or killing of freedom of speech, and you don't talk about that, then you are a hypocrite, you are a duplicit, and this is something which needs to come out in the open. It needs to be discussed Adit, he more is not openly in the public domain. he is not even talking about Congress worker who was arrested I mean few days back in Calcutta, साकी जी, मैं and he कलकत्ता में actually बैठा हूँ उसने अभी. वो अपना वो बाल वाल मुड़ा लिया। उसने कहा कि मैं प्लेज लेता हूँ कि जब तक टीएमसी गवर्नमेंट नहीं हटती है, आई विल मैं कभी अपने बाल नहीं बढ़ाऊंगा। अपने अपने कार्यकर्ता के लिए नहीं बोल रहे, क्योंकि इनको लग रहा है कि पता नहीं कुछ इनका जो ग्लोबल अपोजिशन कोalition बिखर जाएगा, सो दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट। अब वो पता नहीं, बट हाउ, मतलब इतना मर्क्यूरियल है कि वो अभी त्रिपुरा में ही वेंट एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट टीएमसी करप्शन। अब जब लड़ ही रहे हो तो फिर अपने कार्यकर्ता के लिए तो बोलो कम से कम, जिसको कि वहाँ टीएमसी गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया है। So Rahul Gandhi, I don't know, he's a specimen. I know they might catch me for this or they might file an FIR against me for this. But Pallavi,
इनको कोई भी नहीं समझा रहा, इवन जर्नलिस्ट नहीं समझा रहे, और राहुल गांधी को क्या, जो सीनियर लीडर्स है वो भी नहीं समझा रहे, बिकॉज वी ऑल्सो वांट अ गुड ऑपोजिशन ना, वी वांट अ स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव ऑपोजिशन एंड कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन। ऐसे तो ऑपोजिशन बनेगी नहीं। See, I have followed Rahul Gandhi from 2004, ever since he joined active politics. And I know many of you may not agree with me, but he began as a good guy. He, at that point of time, would listen to people. And at that point of time, हम लोग अक्सर अमेठी जाते थे, and वो हमसे नुक्कड़ पे बैठ के गप्पे मारते थे, हमारी बातें सुनते थे। वो भी नए थे, हम लोग भी नए थे। मुझे नहीं लगता किसी पत्रकार का ये काम होना चाहिए कि किसी भी नेता को समझाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं ये इन माय जर्नलिज्म नहीं समझाए नहीं, आई एम नॉट एग्जैक्टली लाइक, मे बी रॉन्ग वर्ड है वो समझाना, पर एटलीस्ट कन्वे द मैसेज, कन्वे व्हाट इज ग्राउंड पे क्या है, लोग क्या मैसेज कर रहे हैं। I can only speak for the Congress party because that's the party I covered. तब वो हम लोगों से बात करते थे, he would listen to us, and it was a different Congress. It was like, I tell you what, I remember I had written an article just after Congress lost in Gujarat and Ahmed Patel was alive and he was in charge of election, और मैंने ये लिखा था कि local leaders का grip नहीं था, इसलिए वो हार गए। Ahmed ji called me up in the night and he was very upset because he was being badgered by the other Congress leaders and being blamed for the loss of the Congress over there. So much so he was being accused of being soft on Modi. He just said one thing, Pallavi, मुझे बुरा लगा जो आपने लिखा, लेकिन कोई बात नहीं, तुम तो पत्रकार हो। उसके बाद he met me the next day. He used to call me up and wish me on Diwali and Holi. That was the old Congress. They would talk, they would communicate, they should accept the fact that a journalist doesn't have to be agreeing with you. He never used the word Godi. He understood that I cover the Congress and therefore I know the Congress inside out more than I would ever know the BJP because I'm BJP covered. Any journalist who covers BJP will not know the inside stories of the Congress party. And ये वो समझते थे. The Congress now has become different. Even today, when I was at the Congress headquarters and I was doing a live, I was talking to one of the social media boys. क्या आप इतना बिना मतलब का चोर बोल करते हो? क्या हम नहीं, हम अच्छे थे आप लोगों के साथ, आप लोग भी बदल गए हो, आप लोग भी बीजेपी की भाषा बोलते हो। अगर बीजेपी कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? आप लोगों को भी सबक सिखाना। So किससे बात करोगे आप? वॉल से क्या बात करना? Pallavi, I actually have a question for you. So, and I'm going to answer this question and then I have to leave because my office is calling. No, we're going to end the one question that I actually, so the one question I पूछो. actually had, you said you started covering Rahul Gandhi from 2004. I think the only chance Rahul Gandhi had was to become a prime minister of India was probably in 2009, which he came out publicly in Calcutta and he said, I am not ready for this office. Do you not think that the fact that he's never actually taken any office, that demonstrates that, he's actually trying to run away from responsibility and he just doesn't like to take on responsibility? Yeah, well, I mean, there's the Aditya Thackeray example. I mean, Aditya Thackeray is the son of Uddhav Thackeray when he was the CM, and Uddhav Thackeray was very, very clear about this. And I spoke to many leaders in Shiv Sena, and they told me that we wanted Aditya Thackeray eventually to take over, but it was very important to have that experience, which is why he became a minister. And that's what Dr. Manmohan Singh and many within the Congress party felt that Rahul Gandhi needs to be a part of the government because then only you have that experience, eventually. You have to be a part of government to understand how you have to work, the restrictions, the compromises you have to make. Till you don't do that, everything is very bookish, everything is very idealistic and realistic. On hindsight, many Congress leaders do accept the fact that perhaps he should have been, but वहां पे भी कुछ लोगों ने उनके दिमाग में ये डाल दिया, no, you can't be a part of a coalition government. ये आपके ऊपर हावी हो जाएंगे, ये आपको वीक बना देंगे। जिस दिन सिर्फ कांग्रेस की सरकार बनेगी उस दिन आप प्रधानमंत्री बनना। वो तो होने से रहा ना, सिचुएशन तो चेंज हो गया ना। बट एक चीज ये भी कहते हैं ना कि राहुल गांधी इज नॉट इंटरेस्टेड इन पावर, बट आई डोंट थिंक सो, बिकॉज वो जो क्या कहते हैं वो क्रिमिनल ऑर्डिनेंस जो था, दैट was torn off during that period. If he was not interested in power, he could have said कि मेरा इससे क्या लेने देना यार, मैं तो बाहर से देखता हूँ. But he stepped in. So he possibly wanted power, but he wanted power without responsibility. It was not that he did not like power. He wanted power. He enjoyed power. Who doesn't like power? I like power. You like power. हम लोग सब power like हैं. तो क्या बुराई है? नहीं कोई बुराई नहीं है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तो लेनी होती है ना. इफ यू वांट द राइट्स, हाँ, दे गो, ड्यूटीज, राइट्स एंड ड्यूटीज गो हैंड इन हैंड. चलो, थैंक यू सो मच. मेरे को बहुत अच्छा लगा कैजुअल टॉक. थैंक्स पल्लवी, थैंक्स आदित्य, थैंक्स. थैंक यू, and Adit, I'll see you. Yeah, I'll see you. Okay, bye bye.